Vanakkam, very good evening. Hope weather in your area is good. It's quite chill in here in Bangalore. अच्छा लगता है weather. Weather forecast is going to continue like this for some more time. Normal winter time. We are enjoying the lovely weather in Bangalore. So we are just a couple of weeks away from New Year. It's just 2 weeks. Today is what 19th. Another 12 days, and we are embarking. Bring out the old and bring in the new. हम लोग चलेंगे 2024 की तरफ. One more year of our seniorhood will get added to our kitty. I can see some new faces. Welcome all of you to this chit chat session. We call it Guftagu. We talk on any topic normally. This is a space where you can freely communicate. अपने दिल से बात कर सकते हैं, जुबान से बात कर सकते हैं, directly straight from your heart. There is no restriction. The only 2 points that we are avoiding consciously बात करने के लिए is politics, and the other one is religion related things. So we would like to have clean discussions here, problem solving if possible, sharing experiences. इसी में हम लोग आराम से 1 सवा घंटा 1.5 घंटा तक बिता देते हैं. It's really nice to listen to people's experiences and just to give it some structure. हम लोग उसको एक टॉपिक देते हैं, उसके आसपास इर्द गिर्द we can always discuss anything. So as we come closer to the new year, it is very very standard and common for all of us कि हम लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं. न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मैं ये करूँगा, वो करूँगा और ये करूँगी. आई विल एंश्योर दिस हैपन. स्कूल खुलते खुलते ऑल्सो बचपन में बहुत हम लोग करते थे. इस साल आई एम गोइंग टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट माई स्टडीज. रोज उसी उसी दिन का जो जो निकाला पढ़ाया जाता है वो मैं पढ़ लूंगा एंड दिस एंड दैट. बट कभी नहीं हुआ. पढ़ाई के छोड़ो, whenever it has been मुझे पर्सनली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है व्हेन आई हैव डिसाइडेड आई विल गोइंग फॉरवर्ड आई विल डू दिस बट आई एंड अप डूइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इट. जब मैं देखता हूँ कि इफ राइट फ्रॉम 2007-8 टाइम फ्रेम व्हेन वी यूज्ड टू हैव आवर ऑफिस का प्रोग्राम्स एंड ऑल, और गाने के लिए तो मैं बहुत आगे चला जाता था, तो गा लेता था एंड आई थॉट आई एम डूइंग अ गुड जॉब. जब रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो पता चलता है कितना गंदा गाता हूँ, कितना गंदा गाता हूँ. देन आई डिसाइड कि नहीं यार, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग ऑन स्टेज एनी मोर. ये हमारा रेजोल्यूशन रहेगा, अभी नहीं, नो मोर सिंगिंग. देयर आर पीपल हु नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सेड दैट एंड स्टिल एंडेड अप गोइंग एंड परफॉर्मिंग. पता नहीं वो हो जाता है. बट when you don't meet your own standards you do feel like कि ऐसे किया जाए. लेकिन when others तुमको जरा फुसलाते हैं, बहकाते हैं कि नहीं यार अच्छा ही है ये वो करके, फिर वापस यू गेट बैक. इट इज वेरी इजी टू ब्रेक रेजोल्यूशंस and very commonly said, you make resolutions only to break it. So we are coming to 2024. I'm sure many of you may have some things in your agenda. अभी मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई योगा. इस साल से बराबर रेगुलर करूंगा, हफ्ता भर करूंगा, फिर देखेंगे. The worst thing, okay, I'll start by walk. This will be another resolution. I will start walking every day in the morning. Start on a Monday, Tuesday, whenever. Thursday आते आते लगेगा नहीं यार आज सो जाने दो मुझे सुबह. This is very common. I have faced it myself. Unless the situation really, really, really demands. At least myself, I am only talking about me. There are other better people in the world. मैं तो अपना जब भी लास्ट व्हेन आई एम कैचिंग एट द लास्ट स्ट्रॉ, अभी डूबते हुए नाव को तिनके का सहारा चाहिए जैसे बोलते हैं, तो मेरी वो गति हो गई है तभी जाके मैं थोड़ा डिसिप्लिन बनाऊँ लाइफ में. सो द लास्ट 3-4 years आई हैव रिमेन्ड एज फेयरली डिसिप्लिन्ड पर्सन. बट वायलेशंस होते रहते हैं उसके भी. लाइक इफ यू आर गोइंग टू बी प्रैक्टिसिंग डाइट, तो अगर 4 दिन किया तो 5वां दिन चीट डे आ जाता है. But at least for the first 5-6 months I know I had done it very religiously and it helped me a big time. उसका इम्पैक्ट अभी तक है कि कि सम मेहनत करके जो वजन घटाया है उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया है. 25-30 कम करने के बाद 10 बढ़ा दिया है तो थोड़ा ठीक लगता है फिर भी. बट द फैक्ट इज
resolution is there, resolution is again broken. But this year 2024, I am very sure I am going back to what I did in 2020. बहुत डिसिप्लिन लाइफ निकाला पहले 6 महीने, उसमें बहुत फायदे हुए हैं, उसका फायदा अभी तक चल रहा है, अभी थोड़ा बिगड़ने लगा है. दैट इज व्हाई आई वांट टू रीस्टार्ट दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन. नो, रेजोल्यूशंस जो भी हमने ब्रेक भी किए होंगे इन द पास्ट सो मेनी टाइम्स, सो आई वुड डेफिनेटली लाइक यू फोक्स टू टॉक अबाउट रेजोल्यूशन दैट यू हैव प्लान्ड फॉर द ईयर 2024, और इसके पहले आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है एंड क्या तोड़ा है, क्या निभाया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. रिएक्शन बटन आपके पास है, हाथ ऊपर कर लीजिए उसमें यूज करते हुए, एंड वी वुड लाइक टू लिसन टू ईच वंस एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू रेजोल्यूशंस, implementing them, executing them, and failing to implement, सब कुछ. So floor is open. मुक्ता जी ने हाथ ऊपर किया है, so she is the first one who is going to talk about it. Others please raise. Okay, शिशिर जी भी हाथ ऊपर किया है. Next will be शिशिर जी. मुक्ता जी please go ahead and unmute and share. मुझे लगा कि गुड इवनिंग. Very मुझे good लगा evening. किसी ने तो कर दिया होगा इससे पहले. ओके, कोई बात नहीं, तो मेरे से स्टार्ट होता है. बहुत टाइम से गुफ्तगू में आने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ ना कुछ शाम को थोड़ा ऐसे ही हो जाता था, तो नहीं हो पाई. तो आज जरूर सोचा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है हाँ, टॉपिक. तो ठीक है, हम लोग सब रेजोल्यूशन तो बनाते ही हैं. बचपन की तो यादें आपने याद दिलाई दी कि हम लोग यही करते थे कि हम बिल्कुल डेली अपनी पढ़ाई करेंगे, रोज का रोज काम करेंगे, होमवर्क पूरा नेक्स्ट डे अपना बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे. और वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ? थ्रोट का थोड़ा है, यानी नो प्रॉब्लम. नहीं नहीं, कोई बात आप, नहीं, गर्म पानी हाँ पी रहा हूँ मैं. हाँ, ओके. तो बस इसी तरह की पुरानी बातें थी. कभी अब थोड़ा सा बढ़े, आफ्टर मैरिज की बात करते हैं, तो थोड़ा सिस्टम बनाया कि भाई अब इस बार अपना घर को डिक्लटर रखेंगे, मैनेज रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, बहुत ठीक रखेंगे, अपना अपना सामान मैनेज करेंगे, कबर्ड्स वगैरह ये सब जैसे हम लोग करते हैं. पर वो क्या होता है कि कभी भी वो चलता नहीं है. मतलब थोड़े टाइम तो हम लोग बड़े परफेक्ट थे, 15 दिन चला, महीना चला, और उसके बाद डिस्टर्ब हो ही जाता है. पर अब जब हम लोग थोड़े सीनियर्स के उसमें आ गए हैं इसमें, तो अब थोड़े से हम लोग ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं. और ये आपने बिल्कुल सही कहा, जो 2020 में जो कोविड के बाद हुआ है, हम लोगों ने काफी अपने आप को मैनेज करना सीख लिया है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और घर में भी कैसे रहना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपनी डाइट को लेके भी. तो ये कह सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं. तो अब हम जब हम लोग बनाते हैं अभी कुछ सालों से, तो उसको थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं. मतलब जितना हो पाता है, मतलब ये तो नहीं कह सकते पूरा साल उसको फॉलो किया, बट काफी हद तक उसको फॉलो करते हैं. तो जैसे हम लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि अब हमारी एज में हमें थोड़ा ब्रेन को थोड़ा सा हमें स्टिमुलेट करना चाहिए, थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए. कुछ इस तरह के गेम्स हमें खेलने चाहिए, चाहे वो क्विज है, चाहे वो सुडोकू टाइप के हैं. मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं. कुछ अपनी डाइट में थोड़ा मैनेज कर सकते हैं कि जैसे अब पहले तो हम लोग बहुत रफ टफ खाते थे. अब एक केस के बाद क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा उस तरह की चीजें कम खानी चाहिए जो थोड़ा सा वेट बढ़ाती हैं या थोड़ा हमको आलसी बनाते हैं. तो थोड़ा सा लाइट फूड, फ्रूट्स हैं, लाइट लिक्विड डाइट्स है, थोड़ा इस पर हमको थोड़ा रखना चाहिए. ये मैं कर रही हूँ कुछ सालों से, आफ्टर कोविड तो कर ही रही हूँ. थोड़ा सा हम लोग अपने आसपास अपने घर को कोशिश करते हैं कि थोड़ा घर में, अभी तो घर की बात कर रहे हैं, बाहर तक तो नहीं जाएंगे, कि अपना अपना एटमॉस्फेयर थोड़ा ठीक ठाक रखने की कोशिश करें. क्योंकि क्या होता है ना कि हमको देख के हमारे बच्चे करते हैं, तो हम अगर मैनेज रखेंगे अपनी लाइफ को, तो बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सीखेंगे. वरना क्या होता है कि वो सोचते हैं कि ये भी कुछ नहीं करते, इनकी भी कबर्ड भरी है, इनका भी रूम पड़ा है, तो हम भी ऐसे ही रहे. तो थोड़ा सा ये भी है. और कुछ ये कि अपने थोड़े से हम लोग अपने जो हमारे रिलेशंस हैं उन पर भी थोड़ा फोकस करते हैं. अब पहले जितना मस्ती रहती थी इतना नहीं सोचते थे सीरियस, पर अब थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हैं या जो हमने बनाए हैं फ्रेंड रिलेशंस, उनको भी हम थोड़ा सा टच में रहें. माने जैसे अब हमने म्यूजिक का थोड़ा सा है शौक, तो म्यूजिक पे गए हम लोग. जैसे अब हमें टाइम मिला तो हमने म्यूजिक पर अपना फोकस किया. तो म्यूजिक से रिलेटेड हमारे दोस्त बने, मेरी फ्रेंड्स बनी, जो हमने मिले नहीं हम उनसे कभी पर्सनली,
पर फोन पर इतना अच्छा उनसे हमारी दोस्ती हो गई है कि हम लोग करीब करीब रोज बात करते हैं। कुछ मेरी प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट करती हैं, उनकी होती है तो मैं थोड़ा सॉर्ट आउट करती हूँ। तो एक लगता है कि दुनिया में एक जो हमारे अपने होते हैं उसके अलावा भी है, क्योंकि हमने इस तरह के अपने ये भी हम मेहनत करते हैं बनाने के लिए भी। संबंध ऐसे नहीं बनते, चाहे वो कैसे भी संबंध है उन्हें बनाना पड़ता है। तो इसको भी थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ भाई अब आगे आगे इसको भी बढ़ाएंगे। और एक और बात जो सबसे जरूरी है कि हमें सोचना चाहिए इस एज में आके अपने लाइफ के आगे के प्लान के बारे में, कि हमें आगे, क्योंकि अब ओल्ड तो एज हो ही गई है, कि हमें कैसे आगे प्लान करना है, कैसी हमारी लाइफ रहेगी। भाई ठीक है, बच्चे सब अच्छे हैं, प्यार करते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा उसे कहते हैं ना, जैसे फाइनेंशियली भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। ये भी एक जरूरत है कि हमें इस तरह की बातें भी सोचनी चाहिए। तो मेरा तो मतलब मोटा मोटा जो सोचा है कि ये इस तरह के रखेंगे। और मेन यही रखेंगे, थोड़ा अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे, जैसे वॉकिंग है, थोड़ा हल्का फुल्का योगा है, ज्यादा तो नहीं कर पाते हैं पर थोड़ा बहुत योगा है या वॉकिंग वगैरह थोड़ा सा करेंगे। तो इसको रेजोल्यूशन मेरा तो यही है। और बहुत अच्छे। दैट्स ऑल। थैंक यू हाँ, सो एक मच। एक एक रिलेटेड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा। श्योर सर। एक वन ऑफ द प्रोग्राम्स हम लोग जब काफ़ी जो दोस्त लोग मिले थे, उसमें मेनन नाम का एक जेंटलमैन था है हमारे साथ। जी। अभी वहाँ पे सब मिठाई विठाई बट रही थी, तो वो दिल खोल के खा रहे थे और मुझे पूछा "तो आप क्यों नहीं खा रहे हो?" मैं बोला नहीं, मुझे मिठाई नहीं खानी है, आई एम abstaining माई सेल्फ। हम्म। तो बोले यार, मुझे तो डायबिटीज है, मेरा H1 भी कुछ 9 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मैं खा रहा हूँ क्योंकि अभी आई एम ऑलरेडी 72 बोले वो, और अभी कुछ दिन बचे हैं, अच्छे से जी लूँ मैं। ऊपर जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा किसको पता, दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। उसका ये वो कहना था पॉइंट ऑफ व्यू वो है भी लोगों मुझे। का। बिल्कुल, लोगों का हाँ, अपना अपना है। मेरा नजरिया है कि हमें जितना जीना है, हमें नहीं पता हमें कितना जीना है, पर पता कम से नहीं। कम हम बहुत अच्छे से रहें, बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट रहे, फिजिकली फिट रहे, ब्रेन से भी एक्टिव रहे, मतलब पागल ना बन जाए, एब्सेंस माइंड ना हो जाए। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए हमें भी अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल और होना इसके लिए, चाहिए। उसके लिए एक और ये भी बात है कि इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने को प्यार करना भी सीखें। अरे सबसे पहले अपने ब्यूटीफुल को बात, प्यार करें। वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स बहुत सही बात दैट्स कहा आपने। इम्पोर्टेंट है। जब तक हम अपने से प्यार नहीं करेंगे, दूसरों से क्या खाक प्यार करेंगे? तो यस सर। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो आप योर रेजोल्यूशन इज दैट सबसे प्यार करेंगे अगले साल से। बहुत अच्छे। मैं तो वैसे ही मेरे दिल में बहुत प्यार भरा है, क्योंकि जो बहुत म्यूजिक बढ़िया, में बहुत रहते हैं ना, बढ़िया। उनके मन में प्यार ही प्यार होता है और कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो संगीत में इतने रमे होते हैं। मैं तो एक्चुअली हम्म, बचपन से बहुत ज्यादा शौकीन हूँ म्यूजिक की, और मुझे मौका अब मिला है सीखने का कुछ सालों से। तो मतलब कुछ ग्रुप भी हमारे ऐसे बन गए हैं, जैसे सीनियर्स होते हैं, या और दो चार ग्रुप हैं जिनमें हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ब्यूटीफुल। मुझे इसमें महसूस हुआ कि म्यूजिक तो वाकई में इंसान को बहुत बदल देता है। मतलब नहीं नहीं, दिल वो में बस उसको और कुछ होता ही नहीं, बस प्यार ही प्यार रहता है, क्योंकि वो गीत ही गुनगुनाता है, और गीत गुनगुनाने वाला तो मन से मीठा हो ही जाता है। तो तो वो प्यार प्यार ही ही प्यार बांटेगा और क्या बेशुमार। करेगा। जी। प्यार वेरी ही गुड। बांटेगा वो। नहीं नहीं, वो एक्सटेंडेड फैमिली भी अभी जो है ना, इनके साथ भी हमारा प्यार हो गया है ना, तो प्यार ही प्यार बेशुमार देखा है तेरी आंखों ने, गा ले लो आप अपने, मजा आ जाएगा जी फिर तो। बिल्कुल। देखा है तेरी आंखों में, प्यार ही प्यार बेशुमार। क्या बात है। थैंक यू सर। थैंक यू मुक्ता जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। अभी नेक्स्ट ऑन थैंक यू सो मच। लिस्ट टू टॉक इज शिशिर जी। शिशिर जी, काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ Yeah, एंड। I've done this. How are you, Lex? Good? आई एम डूइंग ग्रेट यार, एज ऑलवेज। That's nice to hear, right? In fact, I've just come back from Bangalore, the 2 days हाँ, before. Yeah. ओह आई सी, ओके। It was a nice place जस्ट weather जस्ट right फॉर द now. इंफॉर्मेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द पीपल, आप हाथ ऊपर कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट बात करना है, तो रिएक्शन बटन है, जस्ट रेज योर हैंड एंड यू विल बी द नेक्स्ट, अदरवाइज मुझे पिक आउट करना पड़ेगा लोगों को, आप बोलो करके, Yeah, विच yeah. इज अवॉइडेबल। या शिशिर जी बढ़िया। So now the resolution we're talking about, right? या For many years, many years, right? Right from my career till today, made a lot of resolutions. करता हूँ, छोड़ भी देता हूँ, और शायद आगे भी यही करूंगा. So it's very सबका यही common होता for हाँ, सभी का ही होता है, right? And करते रहते हैं. But I'll tell you one thing.
Almost 2 3 years before I decided to lose weight. So now I almost lost about 24 kgs precisely. How much? How much? 20 24. 24 kgs, right? Fantastic, yeah, fantastic. That is what I've done, and I'm still trying to maintain that. Nothing. Every weekend I check my weight and still remain the same, about 81 right now. I was almost 100 plus, basically, right? So this is the improvement which I have done right now, right? How much time did it take for you to lose so many I kilos? think almost about, please don't say so many kilos, at least, right? Okay. No, no, 20 It's, kilos is a lot. yeah, yeah, yeah. And I think precisely what almost about 20 months, precisely. So they're 1 kilo a month. Start, Great. start to finish, right? Yeah, there's another issue in that because I've been a diabetic right now, so obviously a lot of things I have to control, right? Especially the sugar and all, right? Okay, even eating the heavy foods also, I try to avoid. I have a system now, right? I take very less. मतलब पहले का 3 चपाती खाता तब 2 कर दिया है. अगर भूख भी लग रही है तो I try to avoid. But being a diabetic patient, one has to take something in between, right? Which I do, right? Hmm. Walking, I've been doing regularly as such right now for the last effective about 8 10 years, right? Almost about 4 to 5 kilometers a week. Sorry, a day, right? 6 days a week right now, right? I've been traveling also every week, so I try to keep up my health as such. But having said this, let me say one more thing, for many years, because I was always in sales, so cigarette पीना एक वो हो जाता था, basically a facade I can say, right, okay. So almost about 2.5 packets, 3 packets sometimes in a day it used to go off, right? Okay. And I smoked almost about till, let me say, right from after college days till 20 plus years, right? But एक साल जब ऐसा आया जो मैं डिसाइड किया कि आई विल स्टॉप. And stopping that, there's a temple in Gujarat. I was those days I was based in Gujarat only, Ahmedabad, right? A Uh-huh. temple known as Ambaji Temple, which is a very famous temple for Mataji, right? I went there, and इसमें काफी भीड़ होती है, but luckily I went right inside the temple, me and my family, of course, right? My amma was there with me, so we हम सब वहां जाके पूजा वूजा किया. I don't know. I was carrying a packet of mine, gold flake. Those days I used to smoke, right? And it went down to my pocket and took out the packet and just placed into the dal patra, right? And उसके बाद I came back next day. I was working those days in Tata's right now. तो my peon said कि सर मैं जा रहा हूँ cigarette packet लाना है. I said आज मत लेके आ. अब almost 20 years have passed. I have not touched a single cigarette right now. That is, let me say, an achievement right now, right? Fantastic. And right. And that's a reason ki, I've got a lot of doctor friends and all. They say Kapil इतना ज्यादा cigarette पीता था एक जमाने में. Compulsive smoker था मैं, right? He said कि यार corona हुआ, something, everything happened. I did not have corona incidentally, right? I was absolutely safe. मेरे घर में सबको हुआ, मुझे नहीं हुआ. I think this is one of the reasons, when the lungs got strong and all. I play a lot, right? I play badminton at this age also, right? Now I do cycling also, right? So all this has actually stimulated the lungs capacity also. And a lot of times I've taken X-rays and a lot of things right now. And I think till so far, so it is good, Nothing is damaged in the lungs. So that is what it is. And now since almost now after Corona, I started singing now, My journey of singing is not too old, right? That has really given me some kind of, basically a passion to sing, basically. And I think that is one of the reasons I can sing because of the good lung capacity. I can sing in a Breath high tone control. also, right? This is what it is. Now, coming back to this new year now, right? 24th. I've been writing, in fact, 2 books right now. One is my, experiences in Reliance and Tata's and Airtel also. I'm trying to complete this novel, sorry, book, right? So hopefully, I should complete this in next year. I wrote it down. A lot of points I've written. Almost, I think, 100 pages I've written also right now. One is lakhs I've written. I'm also writing a novel on a love story right? Okay. वो भी मुझे खत्म करनी है नेक्स्ट ईयर में, तो दोनों चीज Which टारगेट one? लेके चल रहा हूँ. Sorry, say that again. Which is the second one? It's on a love story, right? Okay. Love I'm story. right, so I'm trying to pin up both the novels as such, and I hopefully, should get through.
by this year. This is what the target is. The first 6 months and the next 6 months. This is what I've done. Which I've been thinking about it. Anyway, Fantastic. this is the thought process almost a year back. So it's still going on. So hopefully, I should complete this in the next year. This is what I'm Well, praying also, right? my one question: you are writing. I mean, is it a manuscript that you are creating, or you're typing on a Word document or something like that? I'm right now doing a word script right now, right? Okay, word script you are making. Yeah. Okay, okay, okay. तो तो दो दो कर रहा हूँ तो वो एक हो जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर राइट होपफुली एवरीथिंग गोज वेल राइट so if the mood is in the right spirit because you need a lot of pathos in this basic writing a novel right everybody knows this Shishir, uh, let me tell you, it's easy to write, but it is more difficult to do the proofreading. no I've got a couple of friends right now which they can obviously take care of that right that's not a big issue right now proofreading तो मैं करा ही दूंगा मैं खुद भी करता हूँ मैंने दो तीन लोग के फ्रेंड्स के भी किए ऐसा नहीं है so I think that is not a big issue for me only thing is writing it down jotting it down I and finally bring it out in the papers right now right I found which it I very difficult because my book, mine will be published very soon, but उसके कुछ अच्छा that's great 540 पेजेस हो गया है, तो मुझे अच्छा वो बार बार पढ़ते पढ़ते मेरा तो दिमाग आउट होता है. आई डोंट वांट टू रीड अगेन. नहीं होता उसको है फिर हाँ होता repeat है भी दैट करना इज है. होता है Anyway, अंडरस्टैंड so fantastic. this so matlab I don't make any commitments for the next year right now very I frankly because I think I this hope to release it in the new year. अभी काफी प्रूफ रीडिंग हो चुका है, so now it will go. It has already gone yeah with the publisher. send me So a the copy please forward, right send me a e-copy right yeah, we will do that. We'll launch it mm. properly. Yeah no those So see those things are actually coming out जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं किया था right ऐसा yeah. नहीं कि वी वर नॉट अवेयर हमको करना नहीं था बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट फैमिली प्रेशर्स राइट नाउ राइट children studying children settling down we haters of my as the career also right now one has to prove every and you also know that you were in marketing I believe right तो एक No, I प्रेशर was in उसका IT. I अच्छा was ओके into delivery straightforward. अच्छा delivery right so I was always the head for Gujarat or Delhi right now so there was a lot of pressures in bringing the targets and collections also right now so That is टाइम कभी मिलता नहीं था वो right अब टाइम मिल रहा है नो डाउट राइट नाउ बट स्टिल लेट्स सी आई थिंक कीपिंग ऑल द फिंगर्स क्रॉस्ड राइट नाउ आई थिंक इट शुड गेट थ्रू दिस व्हाट आई एम प्रेइंग बिकॉज आई हैव बीन fantastic. टेलिंग माय वाइफ कि मैं करूंगा करूंगा तो शी से तुम करते तो हो नहीं बैठे रहते हो कुछ करते नहीं हो So another book point by of another point of fight in the house right now तुम करते नहीं हो I'll do it this what it is but so it is anyway interesting. I tell her कि नहीं मैं करता हूँ let me complete this chapter also so let's see if everything goes well with all the good wishes from all the friends right now I think it should get through. I'm sure you will. Yeah, this is what I'm also praying as such. So New Year basically good for us, for all of us right now, right? I do hope it goes very well for the country also, right? Okay, we all wish for the children of us. So let us keep the promises intact and let it go ahead. Let it come as it is, basically, right? बस और क्या, सर्वे जनानां Mm-hmm. सुखिनो भवन्तु, बस. That is what. But that's absolutely good, right? Good luck for your book publishing, and Thank you. Yeah, I'm trying. Let's see. I'm trying in this next year right now. So let's see. okay, good luck, But Shashir. once you have the what do you call the ability to do it, I think one definitely completes. Basically, right. This was also important, right? That is true. Yeah, That yeah. is obviously right. Thank you so much, Lax. Right? Thank you so much. Thank you Thank so you so much. much for Thank you sharing so with us much. your Yeah. plans. Wonderful to know that. Maninder ji has raised her hand, so please go ahead, unmute, and share your thoughts with respect to आप क्या करने Sir, वाले हैं, क्या just one करोगे. second. I would like to talk now. Just I wanted to give a suggestion to Mr. Kapil हाँ. Yeah. or Tell me. whoever is writing a book because just now he mentioned that they need time to jot down and write down what they because it's quite time consuming. Yeah. So if you're aware of some app, there is one app, transcription app. Yeah. I तो know. Huh? उसमें है ना आपको लिखना नहीं है जो भी आप लिखना चाहते हैं मुंह से बोलेंगे तो अपने आप टाइप हो जाता है यू डोंट हैव Right. टू टाइप इट Right. and but that remains in the app only for 72 hours and Okay. within those 72 hours you have to convert into word Hmm. Okay.
It's a good input. नहीं Okay. तो 72 आवर्स के बाद में वो निकल जाएगा आपके ऐप में से। तो है ना, लिखने जब हम लिखने बैठते हैं तो बहुत टाइम, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, यू नो। Uh, I would like to say add in this right now. Can I? Am I unmuted? Right? Yeah, you're unmuted. We can hear you. Uh, You I use chat definitely GPT. I endorse your views as such, but basically, I think जब हम खुद लिखते हैं, that has got more meaningful writer, right? Okay, and we know what we are writing and what आगे भी क्या लिखना है मुझे या पीछे क्या लिख दिया मैंने. So I still love to, carry my own thoughts into that because chat GTP and so many AI tools now, right? Which Yeah, can be yeah. used. There Chat are so GPT No, many. no, can do There are so there many. you There are can, so many. there just what's going on in your mind, you have to Hmm. just speak it out and it will go, the app will go on writing for you. And you can delete or whatever correction you want to do, but that within 72 hours, take it on the word. तो है ना, आप जब अपने थॉट्स को लिखने बैठते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और क्या उसी में तो आपका थॉट भी चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम लिखने बैठते हैं, उसके पीछे अगला मेरा विचार क्या था उसको जब लिखने में तब भूल जाते हैं। इसलिए जब हम बोलते रहेंगे तो वो अपने आप वो ट्रांसक्रिप्शन ऐप में आ जाता है। Yeah. इट्स अप टू यू, लाइक Yeah, Yeah, yeah. I एवरीबody understand. हैज। Yeah, I understand. Correct, No, correct. no, yeah. Very true. Normally, it Yes, is like bullet points we keep and then go Yeah, ahead. bullet points always there, And, right? Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. No, I think what Sarojji is meaning to say, she doesn't mean artificial intelligence. She's just saying whatever your thoughts are coming into your mind, you just speak it out, and that app, whatever she is mentioning, Yeah, it it converts will into break it down. word. Correct. It converts into text and then you can copy it into Yes, Word yes. and then play Or Yeah, around. what she's telling, it will disappear in 72 hours. So I think whatever thoughts are coming to your mind, you just speak it out. It will get there, and then Extend. you can take a screenshot or something, save it somewhere. I don't think she is meaning artificial intelligence like Chat no, GPT. She no, should no, no. not Chat GPT. That is artificial Yeah. intelligence. yeah, very That true. is Yeah, modifying your words. very Whatever true. you Yeah, want, you just tell that app what you want, what subject, and it will automatically provide you Yeah, with some it will paragraphs. span the world to get you whatever the Yes, yeah, English yeah, chat yeah. word is you very it will easy, do. very useful also. But Yeah, I yeah, think it is useful. Sarojji means that whatever you want to speak out, you speak and it will get written there. I think Sarojji, that is what you meant. Yeah. Yeah, yeah, Yes, that's exactly exactly, what she because meant. हम जो Use an app to सोचते हैं। capture your thoughts, which will Yes, be yes, expanded yes. into text, Voice, which you voice can to Yes, export text, into a Word document voice and to play with text it. conversion. yes, voice to text. Yes, yes. Yeah, Yeah, voice to text. Yeah, voice to text. Chalo, thank you. nice, nice. Thank you so much. Right. या मनिंदर जी आप यू गो अहेड। सरोज जी आपके पास आएंगे शशि जी के बाद, Hello, good शशि evening, महाजन के बाद आपके everyone. पास आएंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग मनिंदर जी। Nice to हेलो, see you. थैंक Sir, यू। for me, New Year resolution is no resolution. Why? क्योंकि मैं संकल्प लेती हूँ हर साल, पर वो मेरे को पूरा करने में बड़ी मुश्किल होती है। मैं अपने से प्रॉमिस करती हूँ, नहीं मैं 2 months करा, 3 months करा, 4 months करा, बट आई कैनॉट स्टिक टू दैट। बट फिर भी मैं कुछ फोकस करती हूँ अपने लिए। तो इस साल का मेरा फोकस है टू टेक बेटर केयर ऑफ माई सेल्फ। गुड लाइक, थॉट। हाँ, मैं यहाँ हूँ और मेरे इर्द गिर्द का जो सर्कल है, चक्र है, मैं उसी के बारे में बस सोचूंगी। उस चक्कर में क्या है, सबसे पहले मैं सोचती हूँ मेरी हेल्थ। हेल्थ में जो तो हमें प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही हैं, उसकी तो हम मेडिसिन खा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये होना चाहिए कि बड़ा रेगुलर रिलीजियसली अपना चेकअप, क्वार्टरली अपना चेकअप करवाएं, ताकि हमें कुछ और प्रॉब्लम है वो टाइमली हमें पता चल सके, मेडिसिन उसकी हम रेगुलरली ले सकें। और इसमें आता है दूसरा पॉइंट है मेरा, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को अपनी ईटिंग हैबिट्स पे बहुत कंट्रोल करना है इस एज में, जो कि बहुत ज़रूरी है। ईटिंग हैबिट्स, शुगर अवॉइड, सॉल्ट अवॉइड, जो फ्राइड चीज़ें हैं वो मैं अवॉइड करूँगी। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं खाती, बट फिर भी मैं ये सोचती हूँ मैं उन पे कंट्रोल करूँगी। तो इससे क्या होगा कि हेल्थ में एक तो वेट लॉस होगा,
मेरे को बैक एक की प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कि आपका वेट थोड़ा सा और कम करो, मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, बट इवन देन डॉक्टर से कि थोड़ा सा वेट रिड्यूस करने से आपकी बैक एक। तो मेरा ये फोकस है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स ऐसे बनाऊं जिसमें मेरा वेट लॉस होए। और जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक, ये मैं रेगुलरली इंक्लूड करूं और इनको रिलीजियसली फॉलो करूं, तभी मेरे को फायदा होगा। ये मेरा फोकस है इस साल का, मैं कर रही हूँ। ये नहीं है कि आज 31 दिसंबर और कल से सारा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, ये नहीं होता। वी आर फॉलोइंग इट, बट एक माइंड में गोल सेट करके अपने आप से प्रॉमिस मैं कर रही हूँ कि ये मैंने इनको, इन चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो करना है। सेकंड मेरे चक्र में आता है कि मैंने अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जिनके पास बैठ के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताऊं। और थर्डली मेरे को लगता है कि जो मेरी हॉबीज़ हैं, मैं उनको और एक्सप्लोर करूं, उनमें और मैं एकदम से बिजी हो जाऊं कि मेरे को बड़ा अच्छा लगे और मेरा टाइम बहुत अच्छी तरह से पास हो। जैसे अभी तो ये देखो ना, सीनियर्स टुडे और एवरग्रीन क्लब की वजह से हम लोग कितने बिजी हो गए हैं, और इस चीज़ में भी हम अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करें, जिससे कि आने वाला टाइम जो हमारा नेक्स्ट ईयर है, जैसे आप बोल रहे हो सारे कि नेक्स्ट ईयर में हम लोग काफ़ी कुछ करने वाले हैं, तो उसमें हम बिजी हो जाएंगे। उससे ये है कि आपका माइंड इज़ ऑलवेज बिजी एंड दीज थिंग्स आर स्ट्रेस बस्टर, तो वी विल रिमेन स्ट्रेस फ्री। तो ये मेरे मेरे लिए बस बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इनका बड़ा फायदा है हमारे लिए, और इनको हमको फॉलो करना है। अगर इनको फॉलो करेंगे तो नेचुरली हमारे लिए इसका फायदा होगा। तो ये सब बातें ये मैं सोचती हूँ। और खुश रहना, सबसे बड़ी बात है खुश रहना, और पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देना। मेरी वैसे बेसिक नेचर है कि कुछ गलत चीज़ होती है या सुनती हूँ, मेरे को थोड़ी देर इफेक्ट रहता है, मैं इतना नेगेटिव नहीं जाती, पॉजिटिव वैसे रहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं और पॉजिटिव रहूँ। और चौथी चीज़ है कि मेरे को ना इंस्पिरेशनल चीज़ें पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं। कहीं कोई बुक मिल जाए, नेट में एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि इंस्पिरेशनल चीज़ें, और ये सब पढ़ूँ। ये सारे मेरे फोकस एरियाज है जिनको मैं सोचती हूँ ये करके मैं अपने मन को बहुत खुश रखूँ और शांत रहूँ। ये सबसे बड़ी बात है, यही मेरा 2024 का एरिया ऑफ फोकस है। आप कह लो रेजोल्यूशन, कह लो एरिया ऑफ फोकस, कह लो प्रॉमिस, कह लो संकल्प, कह लो, यही है मेरा, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा मकसद है कि हाँ, अपने आप को खुश रखो, वो तो बहुत। बस बस। माय ओनली पॉइंट, आई मीन फॉर ऑल ऑफ अस, कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इफ वी डिसाइड दैट हम करेंगे, आई थिंक वी शुड चूज टू डू थिंग्स दैट वी विल आल्सो एंजॉय डूइंग। फोर्सिबली हम या अपने आप को बोलेंगे कि मैं आई विल रिमेन इन टच विद एवरीबॉडी अंडर द सन, सस्टेन नहीं हो पाएगा बियॉन्ड अ पॉइंट। जी। ये मुझे हिचकिचाहट है इसकी। सो लेट्स लुक एट ऑप्शंस, और वो स्ट्रेच टारगेट बोलते हैं ना हम लोग इन आवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। टारगेट रखो, उसको थोड़ा स्ट्रेच करो एंड रीच दैट, मीट दैट टारगेट। या वैसे रखना करेक्ट। रियल लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट है। जो भी टारगेट है जो अचीवेबली रखो वो इजी रहता है मेरे ख्याल से। बट या दीज आर ऑल यस। ऑप्शंस। ऐसे जबरदस्ती कुछ करने में मजा नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा लगना जबरदस्ती चाहिए। होता भी नहीं। तभी तो सर मैंने हाँ, बोला कि मैं रूटीन को जैसे कि मैं एज ए रेजोल्यूशन नहीं ले सकती है, प्रॉमिस नहीं मैं अपने से कर सकती कि ये हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कैविएट है उसमें। एनीवे, थैंक यू सो मच मनिंदर जी, थैंक आपकी यू बात सर। सुन के अच्छा लगा। शशि महाजन जी, प्लीज गो अहेड, अनम्यूट करके आप बयान कीजिए, वॉट एवर हेलो योर थॉट्स आर। हेलो हेलो। यस शशि जी, आवाज आ, प्लीज। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर। अरे वाह, मजा आ गया आपको तो मिलके। अर्चना जी हो ना, एक क्या नाम उन्होंने बोला था कि आप जरूर आओ तो मुझे हाँ, तो आ पता। जाओ, अच्छा किया आप आ रहे हैं कि आप इसे अपना ही घर समझो। हाँ, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ ना, तो मुझे बोला कि बहुत। आपके बाल अभी बहुत काले हैं, सीनियर सिटीजन नहीं लग रहे हैं।
वो अब तो सफेद है वैसे, मतलब लग रहा है इसमें थोड़ा 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 सफेद भी है काफी। तो मैं मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो थोड़ी ज्यादा बात नहीं करनी। नहीं मैं नहीं, बात करो, दिल खोल के बात करो जी, ज्यादा कम का सवाल नहीं, दिल खोल के जो दिल में आया जी मैं मजे से बात करो। सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब यूट्यूब चैनल है ना, उसमें मैं पार्टनर हूँ, यूट्यूब चैनल। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि वो मेरे सॉन्ग सुने, शशि महाजन के नाम। अच्छा, श्योर, विल डू दैट। शशि महाजन, शशि महाजन यूट्यूब में करोगे ना हाँ हाँ। स्पीकर में, तो मेरे सारे सॉन्ग आ जाएंगे। तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरे सॉन्ग सुने और मुझे मतलब थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिले। प्रोत्साहन देंगे आपको। 2024 में आप कितने गाने गाने वाले हैं उसमें? मेरे तो टारगेट क्या है? कम से कम 6,000 सॉन्ग है यूट्यूब, मतलब यूट्यूब में 600 सॉन्ग है मेरा, 600। नो, अभी है, लेकिन 2024 में कितने गाने वाले हैं? 600 से बढ़ के कब तक, कहाँ तक जाएगा वो? मेरा एक्चुअली मूड पर डिपेंड होता है कि मैं, मेरे को 10 साल हो गए। नहीं, आई एम ट्राइंग टू गिव, आपके मुंह से रेजोल्यूशन निकालना चाहता हूँ मैं। टारगेट 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 चाहिए। कम से कम दो जी हजार जी, टारगेट बताओ। दो हजार गाने तो हम सारे गाने वाले हैं, ऐसा जितने हैं ना यहाँ पे जो आप दिख रहे हो कैमरे में, ऑल आर एक्चुअली सिंगर्स, और एक से एक सिंगर हैं। एक्चुअली रिक्वेस्ट ठीक है, आप यूट्यूब पे बहुत बढ़िया गा रहे हैं, आई अप्रिशिएट दिस थिंग। एक हाँ टारगेट बना लो। हाँ, बोलिए शशि जी, बोलिए आप, अजय जी एक मिनट। हाँ। 1,000 सॉन्ग तो कर ही दूंगा 2024 में। तो अबाउट आपने इसके पहले भी क्या क्या संकल्प किया था, और किस हद तक आप मेरे को सक्सेसफुल हुए? 9-10 साल हो गया है यूट्यूब में, 9-10 8-9 साल हो गए। हाँ, तो मुझे वो पार्टनर बना दिया। तो मुझे मेरे यूट्यूब टीवी में आते हैं सॉन्ग, टीवी में, अच्छा, टीवी शशि महाजन स्पीकर में कहोगे ना, शशि महाजन, तो जरूर मेरे जरूर देखेंगे, हम जरूर देखेंगे। और आप आपका आपकी आप, प्रोग्राम मुझे प्रोग्रेस मिलेगी थोड़ी सी आपके कारण कर क्योंकि आपको हाँ, हमने हेलो हेलो, हैं हाँ, सुनना कभी। सुन रहे हैं, गो अहेड गो अहेड। तो मेरे धार्मिक सॉन्ग भी हैं इसमें, सारे काफी धार्मिक सॉन्ग है और मेरे पॉपुलर, मतलब काफी लोग पसंद करते हैं मेरे सॉन्ग। मैं कहता खुद तो नहीं कहता मैं, लोग पसंद करते हैं। मैं खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखता कि मुझे लोग पसंद करते हैं, लेकिन भगवान की दया से, भोले शंकर की दया से मुझे लोग काफी पसंद करते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका धन्यवाद होगा यदि आप मेरे सॉन्ग सुनेंगे और मेरी लाइक बढ़ेगी, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मुझे मतलब खुशी होगी कि मैं भी इतनी सिटीजन हूँ और मुझे मतलब कोई तो आपका आप टारगेट है, आपका आपका टारगेट है कुछ इतना नंबर, कितने सब्सक्रिप्शन चाहिए? मेरे कम से एक्स कम एन अमाउंट, एक्स अमाउंट कुछ है? 1,008 सब्सक्राइबर हैं, 1,008 देखिए, सब्सक्राइबर आपको हैं। अच्छा अच्छा भला ये प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया अपना। 7600 व्यूवर है, 7600 व्यूवर, और हम 1,008 है सब्सक्राइबर। तो आपके कारण, आप लोगों के कारण सभी के, मेरी मतलब और प्रोग्रेस होगी। तो मैं बस मुझे है। नहीं नहीं नहीं, आपका मकसद तो समझ गया, बट आप रेजोल्यूशन की बात करिए अभी। मैं तो तो वहां, आपने तय क्या किया है 2024 के लिए, क्या करूंगा? ये तो आपका टारगेट का नंबर्स हो गया, और क्या, और कुछ है बताने लायक हमारे, इससे हम लोग भी कुछ सीख लेंगे। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ना मतलब ज्यादा बात करूंगा। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात। थैंक यू शशि जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे अर्चना जी ने बोला था कि आप जरूर। नहीं नहीं, अर्चना जी और फिरोज जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, इस वजह से हम लोग ठीक इतने है, आराम से, इत्मीनान से बात कर सकते हैं। तो थैंक्स टू सीनियर्स टुडे, ये सब हो रहा है। तो जी का रात को फोन आया था, कहते आप ज्वाइन करो, आपको पूरा पूरा मतलब फैसिलिटी मिलेगी आपको, मतलब हम नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे बात भी इतना नहीं ना करना आता है, तो नहीं फर्स्ट नहीं टाइम नहीं, कोई नहीं, कोई नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट डे में ओके आप ये जो शशि फुल बात शशि कर। जी, 20 साल के पीछे में 2 लाइनें तो सुना दीजिए मटिया जी आपकी। हाँ, एक मुखड़ा सुना दीजिए आप हमारे लिए। अच्छा एक सुनो। छोटा सा 2 लाइनें थोड़ा। ये पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू जी, थैंक यू शशि जी। नाउ वी मूव टू ममता जी। ममता जी, प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। निंदा जी। सर आप पूछ रहे हो नेक्स्ट ईयर का रेजोल्यूशन? हाँ जी, एक्चुअली नेक्स्ट हाँ ईयर। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, अगर आपने पहले भी कुछ रेजोल्यूशन किया उस बारे में भी आप बात कर सकती हैं। नहीं नहीं, मैं तो सेशन में आपके फर्स्ट टाइम आई हूँ। जितना भी अभी भी आई हूँ, मैंने यही सुना कि आप शायद यही पूछने की रेजोल्यूशन आप लोग क्या लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ है ना? नहीं नहीं, वो भी है, और पास्ट में जो भी हो उसका भी आप बात कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर मेरे को ना बहुत अपना टाइम से बताओ। कि हम संसार से इतना कुछ लेते हैं, जीवन में हम सबसे कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं, तो मैं भी सोच लिया सोसाइटी के लिए कुछ करूं बहुत टाइम से। और मेरा मतलब मुझे लगता था कि मैं करूं भी और मैं कंफर्टेबल भी रहूं। एक होता है ना, आप बाहर निकल के कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं था, थोड़ी फैमिली की जिम्मेदारियां भी थी। तो ये तो मेरा मेरा मानना है, आप जो मांगते हो वो मिलता है, तो टाइम बेशक लगता है। तो मैं ये सोचती थी और मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या करूं, लेकिन प्रभु ने ऐसी कृपा करी, जब ये ऑनलाइन क्लासेस लगी 50+ वालों की जो भी थी, एवरग्रीन में मैं जैसे आपके साथ भी जुड़ी हूँ, तो हमारा वो जो ग्रुप चलता है वो एकदम टूट गया। हम लोग सब परेशान। उसी बीच में हमने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, वहां मुझे भी मौका मिला, मैंने भी एक ग्रुप बनाया। और सच में आप सेवा का अगर भाव हो ना, भगवान कारण देता है। तो अभी हम क्या करते हैं, योगा भी मैं कराती हूँ, भजन भी करते हैं हम लोग, और एक्टिविटीज और भी करते हैं। मैं चाहती हूँ अगले साल ये और बढ़े, और बढ़े, क्योंकि एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस्ड ग्रुप है जो अभी तक नेग्लेक्टेड था। बंदा हर एक फील्ड में मेच्योर होके निकलते थे रिटायर के रूप में, और आप फील्ड से रिटायर होते हो तो आपको, मुझे लगता है, घर वाले भी उसी वे में देखने लगते हैं। तक हमारी सोसाइटी का ये है कि वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बिल्कुल बड़े बुजुर्गों पर सेट होता था। लेकिन आज जिसने भी ये शुरू करा ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग को सिखाया, हम इतने एक्टिव हुए कि हम बच्चों के साथ अपडेटेड हैं, है ना, नई नई चीजें हम आपस में ही सीख रहे हैं। सही तो बात। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ, आगे और साल में भी मैं और ज्यादा लोगों को जोड़ सकूं, और मतलब सोसाइटी के लिए कुछ भी करूं, यही बहुत रेजोल्यूशन फील्ड में हो पर हो। बढ़िया है। तो ये तो आपका गिव गिव बैक टाइम है अपना, तो यू यस आर सर। गिविंग समथिंग इन रिटर्न टू द सोसाइटी। ये तो बहुत अच्छा थॉट है, एंड वी रियली आई एडमायर दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ योर्स। बहुत अच्छे से आपको सब सक्सेस मिलेगा। एनी हेल्प, एनी सपोर्ट दैट यू नीड, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ, यू कैन बैंक ऑन अस। हम थैंक लोग की हमारी तरफ से कुछ यू। चल छोटा रहा है, हम अच्छे मोटा। खासे लोग हैं, और हम आज हमने सुंदरकांड करा था, अजय भाई को तो मैंने बुलाया भी था पर ये बिजी होते हैं, यहाँ आते जरूर है चलिए, अच्छा है। थैंक यू सो मच ममता जी। सरोज जी, आप हाथ नीचे कर दिया था, लेकिन आपको बोलना है मुझे पता है, तो आप प्लीज गो अहेड। मैं सर बाद में भी बोल सकती हूँ, आप और किसी को ले लीजिए। आप गो अहेड, यू, बिकॉज देयर इज नो अदर हैंड रेज्ड एट दिस पॉइंट, तो आपका हैंड सर रेज था फर्स्ट तो ऑफ हम कर ऑल वी दिया। नो, हम जानते हैं कि रिजोल्यूशन क्या है। हाँ, रिजोल्यूशन इज व्हाट वी सेट अ गोल एंड मेक कमिटमेंट टू सेल्फ। अपने आप को हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उसको अचीव करेंगे। तो हम सबको मालूम है कि प्रोमिसेस आर टू बी ब्रोकन, यू नो। कभी भी एब्सोल्युटली। कोई अपना प्रॉमिस नहीं रखता है, तो अब जब ब्रेक करने ही वाले हैं तो रखना ही क्यों है। क्यों है। तो मेरा तो बहुत सालों से ये रिजोल्यूशन रहा है हाँ कि हाँ। नो रिजोल्यूशन फॉर एनी टाइम, यू नो। और मेरे 2-3 गोल्स हैं मेरे लाइफ में जो मैंने बहुत सब पहले सेट करके रखे थे। हम्म। जैसे कि है, यू नो, डाइट की बात। कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे वजन कम करना है तो मैं डाइट करूंगी। मेरा ये कहना है कि मैं तो डाइटिंग नहीं करूंगी, पर आई विल डाई ईटिंग। मैं खा के मरूंगी क्या बात है, क्या I बात will die eating because by this age, I know what food suits me. You know, if है। today I go for keto diet,
या जो फास्टिंग वाले होते हैं 12 घंटा खाओ 12 घंटा नहीं खाओ, वो तो कितना टाइम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते वो, है ना। तो और उसके बाद फिर से व्हेन यू स्टॉप दैट कीटो डाइट और व्हाट एवर अदर डाइट्स आर देयर, तो अपना वेट तो वही बढ़ जाता है। तो जो अब तक हमको सूट कर रहा है, अब तक इतनी बड़ी उम्र हो गई है हमारी, तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर को क्या सूट करता है, बस वही खाना है। और उसको कितना लिमिट में खाना है, हमको कुछ एक्सेस में नहीं खाना है। ये हमको जानना चाहिए कि एनीथिंग इन एक्सेस इज अ पॉइजन टू आवर बॉडी। ट्रू ट्रू। सो अगर वो हम अपने ध्यान पे रखेंगे तो हम जरूर कुछ ये करेंगे, उससे हमको फायदा ही होने वाला है। जंक फूड खाना नहीं है, जो अब तक हम जान चुके हैं कि इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सो नो नीड टू मेक फ्रेश रेजोल्यूशन अबाउट द डाइट। अनदर थिंग इज, मेरा मोटो रहा है लाइफ में, जस्ट गो विद द फ्लो। कि जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, जस्ट फेस इट, don't try to avoid, face, put your best foot forward and face it. So अपने आप जो अगर है कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो चली भी जाएगी, पर हमको उसको अपने करेज से उसको फेस करना है। एंड अदर मोटो ऑफ माय लाइफ इज टू स्प्रेड लव, लाफ्टर एंड हैप्पीनेस। हम वंडरफुल। जितना खुश रहेंगे, दूसरों को भी उतना खुश रख सकेंगे। ये दो तीन प्रिंसिपल मेरे लाइफ में बहुत पहले से रहे हैं। देयर आर नो मोर न्यू रेजोल्यूशंस, ओनली रेजोल्यूशन इज नो रेजोल्यूशन, गुड। as Maninder said, Maninder and Neja said, no खुशी, resolutions. खुशियां बांटो, और क्या चाहिए। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड लोग करते रहो। अब अच्छा लगता है देखने में, सुनने में। Thank you, sir. These are good things and joy shared is joy doubled, वो भी तो है। एंड sorrow Yes, shared is sorrow halved। तो उस वजह से आप गो अहेड, डू इट, वी आर ऑल विथ यू। हम भी आपके साथ खुश हैं। thank you, sir. विश्वनाथन सुब्रमण्यम ने हाथ ऊपर किया, ये मेरा अंतरंग मित्र है स्कूल डेज से। यस नाथन, अनम्यूट एंड गेट क्रैकिंग। अनम्यूट, अनम्यूट। Thank you, Lex. गुड इवनिंग। Okay, I wanted to say a lot of things, but Sarojji has put it, whatever I wanted to say, she has put it so brilliantly. I am echoing the same feelings. I have not much to add. Actually, I have nothing against people who make New Year resolution and implement that, all them also. I have great respect for them. But luckily, I don't have such bad habits. Okay, so I feel that if you are making a resolution, if you find something is not going well in your habits or in your thinking or in your reactions, then you don't have to wait till the new year to change it. Okay, so you can take any time during the year, you can make a resolution and try to implement it. Okay, so you don't have to wait till the new year. New year is a day, is just another day as far as I am concerned. Okay, actually it is yeah, of course it is a day to think back and introspect and retrospect and what has gone wrong in your life or what has gone right, and avoid whatever things have gone wrong, change your reaction, change your ways, and if something has gone right, repeat the same behavior. So that's it. It is just a point, a halting point where you can think back and correct your own behaviors. And I don't see any point in making a new resolution that मैं इसको dieting करूँगा या मैं और exercise करूँगा. Like Madam told, I loved the way she told that I will rather die eating. Okay. Anyway, even I am not an overeater. Actually, I want to eat more to gain weight, but somehow I am not able to gain weight. So even I had tried this resolution of gaining weight, but I have failed miserably. Okay. So just I believe that, I mean, if you have a very strict, for example, diet plan or something, you are bound to get frustrated and you are going to become a more unhappier person than you were. So have everything in moderation. Whatever you like, you enjoy. By this time we should know that what suits our body. Okay. So which food?
So have everything in moderation. Don't be too strict with yourself and don't make yourself unhappy and frustrated. Have a enjoyable life. And what she told about spreading love, laughter, that is, of course, everybody should follow. You should try to laugh more and be lighter in mind. Okay. So that is one resolution. I think I have to make that, not to get affected by external circumstances or other people around, and maintain yourself in a balanced state of mind. Take it lightly. Take things easy. Everything is temporary. All this, their life is a temporary phenomenon. So don't take yourself too seriously. Don't take others also too seriously. Okay, and don't take any hard circumstances around you. Everything will pass away. Everything will pass. This too shall pass. If there is a bad circumstance, and count your blessings. Don't forget to count your blessings every day in the morning. Okay, for what you are, for whatever you are alive. So first, the gratitude to God that you are alive in the morning, and all your loved ones, they are still around you, and you have a reasonable health. Okay, so that's it. I mean, take it easy and be less hard on yourself, be less hard on others. Okay, play along the rest of the game with cheer and try to laugh as much as you can. As far as the circumstance allow you to laugh and have fun. That's it. Okay. Laughing is That is easier. no other. No. Nada, sorry. Laughing is easier, but smiling is difficult. Yeah, that's correct. Anita ji makes us smile during yoga sessions. It's very difficult. But we all smile. We wear a plastic smiles and move around. And that is another thing. I mean, don't put up a mask. Okay, be yourself. Okay, yeah, be yourself. And but smile has its own effects. Okay, even if you force a smile, it has an effect on your mind. So try to smile often. Try to laugh often. Sing, laugh, sing. And this is a good platform to sing and laugh. The singing is a great therapy. So that I would like to advise who are not into singing. Forget that whether you are a good singer or a bad singer. Do sing out loud whatever you want to sing. Okay. And this is the age then where we have to shed our inhibitions and be ourselves. Enjoy life. That's it. Okay. Well said. Thank you. Good. That was good. खुश रहो और क्या? खुश रहो और क्या लगा दुनिया में. Thank you, Lex. You can always start with a fake smile and slowly it will become permanent, sir. क्या बात कही आपने भी. Yes, I was about to say the same thing, Saroj ji. Fake it till you make it. Yes. Fake it. Smile is always looks good on every face, That's true. I'll be smiling, So that is one resolution we can make. We can all make. Oh yes. Smile more. Put on a smiling face. Yeah. I'm going to smile a lot. Yeah. Okay. So till 31st December, I don't have to laugh and smile. Thank you, Nathan. Then we move to Satyanarayan, who has actually raised his hand. Unmute yourself, sir. Thanks, Nathan, for being there with us. Good evening. Actually, I joined late with you. I was just keeping an evening walk with my old senior youngsters. Oh, senior. Those for almost 70, 75 plus. They are all senior youngsters. Wonderful. So basically, actually, what Saroj madam and Mr. Vishwanathan sir has told, that is absolutely, I agree with both of them actually. See what happens, every individual, they themselves are the doctors of their own body itself. Because when we approach to any medical practitioner, no, वो पूछता है सर क्या हो रहा है, कौन सा तबीयत है, कब से चल रहा है, सुबह से है कि शाम से है, कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, खाने के बाद हो रहा है या खाने के पहले हो रहा है. So everything he asks with us only, और हमको बताना पड़ता है कि सर this is happening from such and such dates and I am having from such and such 1 week or 10 week or 1 month like that.
So based on that one, he interprets and he prescribes the medicine to any individual persons. बोलता है ठीक है आप देखिए 15 दिन खा के देखिए, बाद में 15 दिन के बाद में आके देखिए, या 1 महीने के बाद में आके देखिए. So my own resolutions, we should not fix with anything. Every individual has got their own body anatomy system different with different persons. So what we feel pleasure, in what activities we feel pleasure, that we should maintain. Okay. See, something, so you are expert than me, and I'll be expert than others, and others will be expert than others. So nobody is having the same platform, and everybody bodies requires different types of environment, different of weather, and different types of, they have got the resistance power and sustainability. So based on that one, any individual, he has to take a decision how he must keep the smiling face. As you said, that laughing is totally different. Anybody can laugh, but smiling, to maintain a smiling is very difficult. Anybody, क्योंकि एवरी सभी के फेस में स्ट्रेस फील रहता है. अभी यू विल नॉट बिलीव, नाउ आई एम क्रॉस 75 रनिंग 76. Okay, at the age of 36. Okay, so I had suffered one this thing vertigo problem where the body balance was totally out, and I have consulted with almost all every expert doctors, right from your cardiologist, physician, ENT से लेकर up to the CMC वेलुर हॉस्पिटल तक मैंने चेकअप करवाया था, न्यूरोलॉजिस्ट से चेकअप कराया था. उन्होंने एक ही बात कहा है कि योर सर्वाइवल इज ओनली 1%, 99% देयर इज नो होप फॉर योर सर्वाइवल. क्या बात है. मेरा एज 36 था. आई हैव गॉट 3 months old बेबी. My wife doesn't know Hindi at that time. My mother-in-law was with me. She couldn't understand Hindi. She couldn't able to speak in Hindi. So that was a situation. And my parents were 75 and 77 years old at that time. I could not able to convey what is my problem with me. And doctors बोल दिया कि साहब आपका तो 1% survival है करके. So that was the day, and now almost of 40 years I crossed. Okay. उन्होंने बोला I was doing a heavy exercise, all yogasans and different of dips and your bhujangas, so many yogasans I was doing till the age of 25, 26. But suddenly when everything was stopped, it was totally impacted on the system because I was doing night duty, day duty, night duty, day duty. So the resolution was totally different from other individual persons. बाकी लोग कितना strenuous exercise करता, that was different thing. So ultimate my resolution of life is that we have to maintain what our body gives us signals to us. आज थक गया भैया आराम करो, आज एनर्जेटिक लग रहा है थोड़ा सा दौड़ लगाओ, आज खाने की इच्छा, क्योंकि डॉक्टर भी क्या बोलता है व्हेन यू आर गेटिंग द बेड रिडन, वो आपके रिलेटिव्स को बोलता है अभी इसका ज्यादा तो दिन बचे नहीं है, व्हाट एवर ही वांट्स टू ईट लेट हिम ईट. ठीक है, ऑयल खाना चाहता है ऑयल खाने दो, ड्राई फ्रूट खाना चाहता है ड्राई फ्रूट खाने दो, लेट हिम ईट so that he will die satisfactorily without any grudges. So the main resolution is that every day is a happy day. हम लोग कल सुबह रात को सो के कल सुबह उठता है, that is a happy day for us, that is a new year day for us. We need not maintain the area new year 2024 आ रहा है, 2025 आ रहा है. ठीक है, so every day is a new year day for at this age for us. आजकल तो एज का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. 50 साल वाले भी पढ़े निकल जाता है और 90 साल वाला भी हमसे एक्टिव रहता है. So the end age is not predictable. So every day is a new day, every day is a new resolution for everybody. So whatever our body says, whatever our body gives us signals, that we have to maintain. Only the thing is that we should be enjoy with everybody. Don't maintain any grudges against anybody. Don't complain against anybody. यार उसने मेरे को आज सैल्यूट नहीं किया, इसने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं किया, आज मेरे को गुड इवनिंग नहीं किया, मैं गया तो मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ. तो ऑल दिस आर नॉनसेंस. दिस आर ओनली जब तक आप चेयर में बैठा तब तक ठीक है. वंस यू केम चेयर आउट ऑफ चेयर, आपको कोई जानता नहीं हु इज मिस्टर एलवाई के, हु इज मिस्टर सत्यनारायण, हु इज एक्सवाइजेड. ही नोज ओनली द चेयर. तो लेट अस अभी ये एज में वी हैव टू मेंटेन द पीस ऑफ माइंड. वी हैव टू follow what our body gives us signal and what the environmental maintains in the amicable atmosphere, that we have to manage. That's all. That is a resolution for every year, not only for the 2024, even it is coming over the years. We have to maintain the amicable atmosphere. We have to keep ourselves in the amicable atmosphere,
and we have to keep in such an environment those who speaks only the positive side. कोई नेगेटिव बात करता है, आप उनको बुरा मत मानिए, आप अलग से हो जाइए. You get away from them. जो पॉजिटिव बात करता है, you just maintain the friendship. So that should be the resolution for everybody and with everybody else. Thanks for the same. You have given me a chance to talk to that topic. That's very inspirational, Yeah. Satyanarayan ji. I mean, at 36, when your chips were down, to rise from that and be here and telling us how to live and look at everything positively is a And great, really, I'm great thought. I'm telling you, even my parents wept, my wife wept, my relatives wept like anything. मतलब 1% survival यार क्या होगा इसका? So that was the day. अब 40-40 साल के बाद में मैं अभी भी 5 किलोमीटर का वॉकिंग करके आ रहा हूँ आज के डेट में. Fantastic, yeah. I think you are a great inspiration for many of us. So this should be the resolution. अपना माइंड को आप एक्सेप्ट करो, अपना बॉडी का सिग्नल को आप पहचानो. That is more than sufficient. One point I would like to ask here is Ajay ji, एक minute. Ajay ji, एक minute. One point I want to make. If we are able to sleep well, feel good on getting up, and then सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, you are doing your basic exercises, अपने आप को फिट रख रहे हो, तो चेकिंग कराना जरूरी है टाइम टू टाइम, और पता करना कि अरे यार इधर कुछ प्रॉब्लम है, स्टार्ट इनवाइटिंग प्रेशर एंड टेंशन. ये अलग सोचने का रवैया है. तो आई एम जस्ट पुटिंग अ थॉट दैट इज इट एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू डू योर चेकअप एवरी क्वार्टर. दवा, आई हैव गिवन अप ऑन मेडिसिन फॉर द लास्ट 4.5 years. एक कोई दवा नहीं ले रहा हूँ मैं, एंड आई थिंक आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट. जो भी है, आई एम, एंड ऑफ कोर्स आई एम कंपल्सरीली कुछ टेस्ट वेस्ट कर लेता हूँ इन बिटवीन जस्ट टू चेक क्या सीन है करके. बट आई एम इंक्रीजिंगली ऑफ द फीलिंग दैट कि यार ईच कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट. इट नीड नॉट बी वो जो एवरेज 5.6 होना चाहिए, 5.4 होना चाहिए, प्री डायबिटिक, डायबिटिक. यार यू आर फीलिंग गुड, उसके ऊपर अपन मगजमारी करना है क्या इन द लास्ट evenings of our life? ये thought है, I'm not elaborating here. So, no, that is good. That what your thought is. I'm accepting your thought because you कौन से डॉक्टर ना BM कर्नाटका के BM क्या नाम उनका डॉक्टर, वो बोलता है कि ये जितने भी अभी कोलेस्ट्रॉल बोल रहा है, there is no bad cholesterol, there is no good cholesterol. ठीक है, हमको वही करना. अभी इन लोग को दवा भेजना करके बोलता है कि यार कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ गया है, खाना खा लो. अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन कर रहा है, योर लिवर फंक्शन इज ओके, योर किडनी फंक्शन इज ओके, दैट यू ट्राई टू मेंटेन. फीलिंग गुड यार, अच्छा लगता है तो क्या करो, चिंता वही करो. तो आप अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट मींस आई एम फिट. जिस दिन मुझे मैं आपका नाम भूल जाऊंगा, दैट डे इज गॉन. ऐसा हो जाएगा. ठीक है. या नाथन, यू आर सेइंग समथिंग. Just wanted to add 2 quick points. I have already talked, so I won't take much time. I totally agree with what Satyanarayan ji is telling. Listen to your body language rather than believe in quarterly checkups and this and that. Okay. The chances are that if you go for an annual checkup or quarterly checkup, they will find something wrong with your body, in your blood constitution, something, and you will start medication and all. So, I mean, the better to listen to your own body. I don't know how many of you are familiar with Dr. Hegde. He says there is no benchmark for diabetes. These are all, pharmaceutical record. Anyway, I don't want to go into that. That 120/80 is the normal benchmark. It is just an average. Okay. For me, it may be 140. Sample average is what? Another finally statistical sampling is statistical sampling. Yeah, it's a small sample. You can't do it on 1.3 billion. Yeah, you cannot. Like he told that if you want to define normal height, then you have to cut Amitabh Bachchan's legs or elongate Jaya Bachchan's. So that's why. Another thing, important thing, when he talked about vertigo, I am reminded of my own vertigo problem, which I suddenly happened one day 30 years back. Okay. When I got up from my bed, I automatically fell down, on the bed. There was a vertigo attack. And I ran from pillar to, I was really shaken. I don't know why this doctors predicted such a grave, this thing, message for Satyanarayan ji. But I ran from neurologist and ear specialist and whatnot. Okay.
And even I was told that it may be due to meningitis and all that. I was really scared for 1 month or so. Finally, I went to the right doctor, a neurophysician, who had my scan of head scan, and he told that it is nothing but sinusitis in the ear, maxillary sinusitis, sinus problem in the ear passage. I think Okay, and he challenge is gave that. diagnosis. It depends on diagnosis and depends on grace of God also. Otherwise, I would have died with anxiety rather than curing such a simple problem. The So mine, that mine is was mine was Meniere's. Mine was Meniere's problem. Meniere's means there is a liquid composition behind that eardrum. हाँ, Eardrum okay, के पीछे में वो liquid रहता है composition which keeps the body in balance. Yeah, middle ear, same problem. But what is the root cause for it? It may be several causes. Okay, it may be something connected to the brain. Maybe. So yeah, mine was just connected to the ear infection, some sinus infection. So sometimes the doctors also scare you, and make you go to do this test, that test, and all. Anyway, it all depends on grace of God, how you come out of any symptoms. Okay. Like 2 years back, I had a swelling here, and again I got panicked. Finally, it turned out to be a tooth cavity problem. So, but anyway, you cannot take any symptoms lightly. Even you will not believe, for last 10 days, I am still suffering vertigo for the last 10 days. Okay. Achha. For last 10 days. ये 10 days में I used to sing in the group, Evergreen Club group. I sang in that group. Achha. In between, I came in the Guftagu with Mr. LBK also. Okay. Achha. And I was just judging my BP was 170 by 98, 170 by 100, 168 by 95, like that. It was fluctuating till yesterday also. It was 165. But in spite of those things, vertigo and everything, I'm not taking that seriously because my body says, you go ahead. Whatever you want to do, you go ahead. Okay. For the last 10 days, I'm doing my activities. I'm singing in the group, everything. So the conclusion point is that the resolution should be as per the signaling of our body. That's all. Yeah, basically it may be caused due to stress also. So if you have your own stress relief methods, maybe you will feel okay. That is, we are the doctors for ourselves. We are the doctors for ourselves. How you should maintain. Yeah, correct. We have to judge our own body constitution, and so we have gained experience, And just on a lighter note, talking about this dieting and eating plan and all that, I came across an obituary last week. Oh, yeah, lovely, 103-year-old. 103-year-old, and it had a great sense of humor who had posted it. They had posted, I think his son or grandson, they have posted it. 103-year-old man. And they have simply written that he loved bhajiyas, pakodas, and halwas and chocolates, and he enjoyed life. Okay. So, I was joking with my friends that maybe by eating bhajiyas and pakodas will promote your longevity. You will live up to 103-year-old. That's the message he was conveying. So, I also felt happy reading it. So there is no point in daily drinking Karela juice if you have an inbuilt resistance, if you don't like, and if you go on drinking Karela juice. I don't think that will work. Okay, if you are willingly taking, then it's okay. So enjoy your bhajiyas and pakodas, but in moderate amounts. And that will keep you more healthier, I feel. Okay, that's all I wanted to add. Thank you. Thanks, Nathan. So I'll go to Jayalakshmi ji because she had raised her hand long ago. After that, I'll go to Ajay Roy ji. उन्होंने भी हाथ ऊपर किया था. Hello, Lax sir. Hello, everybody. After a long time. After a long time, yes. Actually, when you talked about the doctor, Lax sir, I have a family doctor, okay. So he has known me from long time, nearly 30 years. So he knows me in and out. So as soon as I enter with a problem, he sees my body language. So by seeing me itself, if I have any problem, I tell him, he'll look like this and he'll say, okay, you go, you just be natural, be whatever you do, whatever you want, you eat, nothing. So, and
and he'll prescribe. No, doctor, please prescribe something. I'll tell him. So he'll prescribe something. Then before taking the medicine itself, after seeing him, I become okay. Because I have got so much of faith in the doctor. And he tells Placebo effect. They call it placebo effect. Even if they give you a sugar pill, you will feel okay. no, but no. Actually, it depends on the faith also. You should have faith on a person and faith on the doctor. So if he says nothing, if I'll be having some problems. That's why I go to the doctor. But after speaking to him, when he sends me, he may write something. But before getting the pills or the medicines, I become okay. Then he says, actually, I also used to do checkup before Corona. But after Corona, everything stopped. Then again, I went to, now 3-4 years is over. He says, no need to do any checkup. If anything necessary, I will tell you, because the big hospitals, they have kept big machines, this and that. So it's brought with so much of money. So to compensate, they take from the patients. So ye karwa lo. Suppose I had gone to a specialist, he will tell me thousands of tests. So because I went to my family doctor, he just sent me without anything. Suppose I know, if suppose something is there, he will definitely tell me to do a checkup and tell me to do this scan, that scan, or something like that. So that I wanted to That share. is why, it is said, that is why in the medical field, it is said 90% of the diseases are psychosomatic. Yeah, it's Diseases, true. yeah. That is all in Diseases, the yeah. mind. It's all in the mind. Even Mr. Hegde also says the same thing. I like to see his channels actually. BM Hegde. So he takes it everything so lightly, He says, no, everything is ella talenalide, everything is in the head. Everything is in the head. And anybody, any human being feels happy, when a person talks like that. If you go to the doctor and if he says this and that, anybody gets scared. Anybody will get scared and they'll get tense. Arey, kya hone wala hai? Nobody wants to die. Whatever the disease, whatever pains and whatever aches, everybody wants to live, Life is so precious. So they get tensed if you go to such a doctor. So I don't go to any specialist. First, I go to my family doctor. So that's the thing I wanted to share. And about the New Year resolution, I just want to be like this. Whatever I'm doing. Good. Be like that. Everybody loves you the way you are, because naturally your laughter and smile keeps everybody happy about. And we have met you several times, so that's our privilege. But Even my privilege to join such a good group, like all of you are so nice, So thank you every so time. much. Acceptance is the best thing. Acceptance is the best thing. See, Yeah. आप कितना भी dieting करो या जो भी exercise करो, whatever yoga you do, that will maintain you. But you cannot be slim. और जो आप 16 साल की उम्र में आपका बॉडी था, वो आपका होने वाला नहीं है. आप कितना भी योगा करो, कितना भी कुछ करो, तो आपको अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना है कि मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही रहूंगी. So acceptance that is will the solve key. your problem. Correct. Acceptance बहुत important है. It's a key thing that And pray for everybody's health, Everybody, pray to all. Everybody should have good health. And, we should be always happy. Happiness is very important. And no, don't compare with others. Whatever we have to be thankful to God for that. Yes, very true. So Well, we said count your blessings every day. हम जी रहे हैं आज. true, yes. It's a huge thing, So that's the way to go. Thanks, Jayalakshmi ji or Jamila ji. I don't know. I keep getting confused what to call you. But Anything and everything is the same, like sir. What's her name? Jamila or Jayalakshmi. चलिए, thank you so much, अजय जी. आप कुछ बोल रहे थे रेजोल्यूशंस के लिए. इसके बाद ज्ञान शुक्ला जी के पास करेंगे हम. सबकी बात सुन के मतलब कंक्लूजन यही लगता है कि बाकी सब कहते हैं, दुनिया तो बोलेगी, कुछ भी कहते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं, लेकिन जो बात है दिल की सुनो. अपना दिल जो कहता है दैट इज द राइट थिंग. दिल की सुनो. दुनिया वो तो सब कहते आगे बढ़ते रहो, खुश रहो. जहाँ तक ये अभी जया जी ने जैसे बताया कि बिलीव, विश्वास अगर आपको किसी भी चीज पे है
वो कहते हैं ना कि आप एक पत्थर से भी सारे काम करवा सकते हो उनको, अगर आपको बिलीव है। और जहाँ तक है कि डॉक्टर्स और उनकी बात है कि अब वो हकीम लुकमान जो थे वो पुड़िया बना बना के देते थे लोगों को, मिट्टी की और इसकी बबूत की। जड़ी बूटी की, हाँ। अब विश्वास था लोगों को, बबूत भी लग जाती थी। दैट इज द थिंग। तो डॉक्टर क्या कितना बड़ा हो, जो कहते हैं ना कि हम लोग कि यार वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसकी दवाई लग गई, लगी क्या, वो आपने उस पर विश्वास किया और विश्वास से ही आपका हो गया। तो मेरा जो वही जो अपना है अगले साल कमिंग ईयर्स के लिए जो एक सोचा है कि बस ये कि विश्वास करो, हर एक पे विश्वास, मतलब अनबिलीव, वो वैसा नहीं कि आप ब्लाइंडली विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास ऐसा करो कि अपने फैमिली पे, बच्चों पे, वाइफ पे, और जो भी कनेक्टेड हैं आपसे, डॉक्टर ऑब्वियसली वो विश्वास करेंगे तो आपको सब पॉजिटिव होगा। और यही मेरा तो रेजोल्यूशन है सर नया साल का। आदमी का आदमी का थैंक आदमी यू के वेरी मच। प्रति अविश्वास अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, वही जी, अविश्वास करेंगे तो आपको हर, जो कहते हैं ना कि अगर आपके दिमाग में थॉट नेगेटिव है तो आपको हर चीज गलत ही नजर आएगी। जी। और अगर आप बिल्कुल सच है तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी, और उसमें से कुछ ना कुछ, और ये नहीं हो सकता कि किसी भी आदमी में सारी चीजें नेगेटिव हों, अच्छी सही, बुरी दोनों होती है। तो वह बेटर है कि अच्छी बातें उसकी अडॉप्ट करो, नेगेटिव को छोड़ दो। सही, सही। ये ये थैंक यू अजय जी। रेजोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा लगा आपका बात सुन के। थैंक यू वेरी मच सर। ज्ञान शुक्ला जी अब कुछ ज्ञान बांटेंगे हमारे लिए अपने रेजोल्यूशंस के बारे में। जहां तक रिजोल्यूशन की बात है, वो तो हमको लगता है इतने सालों में इतने बार टूटे हैं कि अब उनकी लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही। हमारे ख्याल में हर दिन का एक प्लान चाक आउट करिए या उसको रिजोल्यूशन कुछ भी कहिए, हर दिन का हम लोग बनाना चाहिए। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि स्वस्थ रहे, कि मस्त हर रहे। हाँ मस्त रहे, और अपने हॉबीज को भी पूरा करता रहे, हर चाहता है। लेकिन कभी कभी उसमें अड़चने आती हैं। वैसे शायर ने तो कहा है कि पाल ले कोई रोग है नादां, हाँ, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। हाँ। शायर ने तो ये कह दिया। अब लेकिन आदमी स्वस्थ ही तब भी रहना चाहता है जहां तक हो सके। अब जैसे कुछ इस एज में जैसे सभी कई लोगों ने कहा भी कि कुछ अगर परेशानियां हैं तो उनके साथ अब जीना है, ये एक्सेप्ट कर लें जितनी जल्दी उतना एक्सेप्टेंस। अच्छा है। हाँ, सरोज जी तो बताए थे, एक्सेप्टेंस है इसमें, हाँ, ये काफी लोग एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट बहुत करने लगे। जरूरी है। एक्सेप्टेंस से जो है आपकी पॉजिटिविटी रहती है, वरना निगेटिविटी शुरू हो जाती है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतने प्रसन्न रहेंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे और इस एज में मस्त रहेंगे। क्या तो बात है, हम बढ़िया। तो वेल हमारा तो सेड। यही ज्ञान शुक्ला हमारा जी तो का यही ज्ञान में बहुत भाया है। तो हमारा थैंक तो यू। यही। वक्त जरा कम है, उसके लिए मैं विल गॉड। आज हमने रामन सर की बात नहीं सुनी, अभी बहुत हफ्ते में आए भी नहीं। रामन सर, वुड यू लाइक टू एयर योर व्यूज ऑन द टॉपिक दैट वी हैव? Yes, गुड इवनिंग। yes, sir. Good evening, everybody. Good evening, friends. वेरी गुड इवनिंग। On this subject matter, the New Year resolutions, I used to make some provisions for safety, to the extent possible, I will not be angry. Something like that. So whenever I get angry, I always said to the extent possible. So this is an impossible extent. So I have a right to be angry, things like that. So there is a And caveat. when somebody mentioned, yeah, there is always a caveat. And when somebody, I don't know what is the resolution I should take, there is a joke going, said, oh, that's very easy. Every year I resolve to stop smoking. So you can do it year after year. That is what they is implied, There is a certain, but to be serious, I have set myself some short-term goals. Now and then, I used to start it on New Year Day. This year, I will do this, that. I was able to achieve some of that. Like, I think I have spoken about this in some other context
in our Tuesday meets. There was a time when I admired people who used to chant while going in the train, Vishnu Sahasranam. It is the sound of Sanskrit mantras. They have an attraction. I used to envy them. So one fine morning I decided, well, this is my New Year resolution. I will learn to chant Vishnu Sahasranam. And we sat together, my wife and I. We did achieve that. Now, there was a time when I could recite it without reference to the text or a book. And I was very happy doing that. So also I have learned to play the keyboard. I learned to sing songs, Carnatic classical songs. All this were possible because I made a New Year resolution. I will do this, I will do that, I will do this, I will do that. Super. But there are things which I resolve time and again. I resolve not necessarily on a New Year day, but when you are introspecting, you think that you have to correct yourself in certain aspects. And then you resolve, well, all right, I will control my anger, I will be more patient, I'll be more accommodating and all that. And it has not been easy to stick to that resolution, You burst out angrily. There are some, there is the resolution that has some personal relevance, like stopping smoking, stopping excessive eating, doing regular exercise, this and that. These are personal. Some are social, that I will be conscious with plastic waste. I will be doing this, that. I will have certain amount I will spend on charity. These kind of things I used to resolve, that I will make donations of a certain amount on a monthly basis. And I am happy to say that I have been able to keep it up. Let us say that my goals are not very difficult. Let us say I'll donate 2,000 rupees a month to some cause or other which I consider worthy. And this I've been following for a very long time. And it has given me exceptional satisfaction and happiness. See, you give it to, there are any number of good charitable work going on. Even yesterday, there was this Bharati Seva Kendra or something, which invited some donations for flood relief in southern districts. Okay. Southern district of Tamil Nadu underwent a terrible flood damage in the last 3 days. And they invited for donations. In preference to, that is, donation to government, our government at least, is notorious for mismanagement of money. So when this private person invited donations, we were happy to donate. So making some donations, doing certain tasks like learning music, keyboard, or reciting mantras. I also joined, I think it is. You mentioned it. You will rather get tired of when I No. tell you I did this, I did that. It should be more impersonal. It is better that it is impersonal. There are, what I would suggest is that we don't make impractical resolutions. Right. It is Achievable possible target. it is possible to make resolutions which are easily accomplished. So that is my motto in resolving, not necessarily on the new year. Now and then I do some self-analysis and I decide that this is something that needs correction and I need to correct myself. To a certain extent, I think I achieve some of the goals I set for myself. It is like say breathing exercise, I have a lung condition, not very good lungs. They are only about 40% efficient, and not because of smoking or anything. It just happened that way. Maybe it is congenital.
So I do a regular breathing exercise, pranayama, for some 35 minutes a day. I decided to do this some 35 years before, and to this day I am doing it. Fantastic. So these So, are and really it has, inspiring. though I can't say that this has been very effective, this has cured me of this and that, but still, you live for 85 years, all right. So that is proof if enough that it is working, right? Yeah, it Otherwise, does. a person with Otherwise, 35 to 40% lung power will not survive this much, I should say. So this is the kind of resolutions I make for myself. Some are super. personal, some are social. And I am glad to say that they have given me immense satisfaction. And what I am suggesting to friends is, don't make resolutions like I will not be angry or something like that, which are not possible to be implemented. There are any number of resolutions you can make and achieve. So that is my philosophy with regard to New Year resolutions or even any resolution taken at any point of time. You see. Any point, yes. At some junction of our lives, we come across situations which demand that you look at yourself and you take steps to correct yourself at least. So these Sir, occasions, may I ask what is the realistic resolution for anger management? You are talking about anger. Yes, sir. Yes. You cannot eliminate it totally, but you can say yes, some realistic resolution. Yes, you see, the Laughter anger, therapy. the anger, there are two ways to approach the problem of getting anger so easily. One is frustration with others, somebody near me is not behaving the way I want them. There is another type of anger. I am behaving like this because of this and this and this. That is justification of my anger. And getting tired of other people's faults. So when we sit back, not when you are angry, but when you are not angry and you sit back and examine your behavior, it gives you some clarity about what exactly is wrong with my psyche. What makes me angry like that? So if we inculcate a habit of understanding other people's difficulties, that makes you less angry. This I have found out. So I always stop to think about the other person's plight, why they are behaving like that. Am I in any way responsible for that behavior? This has helped me a lot. Thank you. There is a proverb in English. Does a doctor doctor a doctor the way in which doctor wants to be a doctor or doing doctoring in his own way? In a short form, every doctor, when he goes himself as a patient, okay, when a doctor himself goes as a patient, so whether he can expect the other doctor that he will treat like he himself, or he will treat like him, or he will treat in other way. So same doctor cannot get the same type of treatment with other doctors when he goes as a patient to the doctors. So any individuals, as Mr. Raman sir said, angry is only from the frustration and from the negative environment where we are living. So the best thing is that you get away from the negative environment and mix up with the positive environment and keep your mind steady so that anger can be controlled to certain extent. It cannot be ruled out 100%, but to certain extent it can be controlled. Thanks. Controlling, you see, suppression of an emotion is supposed to create new problems psychologically. Because suppression takes an effort. And a suppressed thing that is like I am not saying suppressing. I'm not saying suppressing. It is said that it will give your anger is a defense mechanism.
ये Yes. जो है ना, भगवान ने हमको कुछ अस्त्र दे रखे हैं. They are the weapons, for your protection. There is You a have to there is get a angry there is sometimes. a say in one Tamil. எல்லா வியாதிக்கு ஒரே மருந்து. There's a saying in Tamil. எல்லா வியாதிக்கு ஒரே மருந்து. That means for One every medicine. disease, There's only one one only medicine. medicine is there. Okay. So I will take only 2 minutes, Mr. Lakshman sir. I will take only 2 minutes. Yeah, go ahead. So எல்லா வியாதிக்கு ஒரே மருந்து. That means for every disease, only one type of medicine is there. In a village, where one kingdom was there, the king was very this thing good ruler. In that same kingdom, one this thing Vaidya was there. That Vaidya was coming from his generation to generation. Okay, so what he gives, stomachache, you take this pill. Headache, you take this pill. For any this thing, you take this pill. He was given to this pill. So that son is also taken up that this thing, ancestors this thing. So one day, one enemy attacked that kingdom. So the king said, Arya, that Vaidya is very famous. Why can't we take some advice with him? So he goes to that Vaidya, and the king asks, Arya, the enemy is going to attack our kingdom. Is there any treatment for that one? So you say that how many elephants are you are having, how many horses you are having, how many camels you are having, how many other these things are having. You give this medicine to everything. So he feeds that this thing, and when the battle starts, everything get the loose motion from all the animals, and the enemy just fled out from the situation. Okay, so what is this time? He, as Mr. Raman said, we cannot suppress the things. We cannot suppress the things. We have to certain level. We can get away from that situation. Once you get away from the situation, your anger automatically will get dilute. It cannot be suppressed. Thank you. Thanks, Satyanarayan ji. There is a Tamil kural, that ஏதிலார் குற்றம் போல் தன் குற்றம் காண்பீர் பின் தீதுண்டோ மண்ணும் உயிர்க்கு. This what it means is, we are so ready to look at other people's faults, but we are blind to our own faults. If we know how to look at our own faults, just with so much of attention which we pay for other people's fault, then the humanity will be a much happier one. That is the essence of that Quran. It has some meaning. You see, all great truths are very simple. Okay. Nothing, not difficult to understand. What if our conscience is clear and you are certain that we are right and others are unfair? No, the fact is, we should appreciate the fact that we always think I am right and you are wrong. Is it not so? Correct. No, I mean unfair allegations. When you know that you have not committed, any offense, but you are wrongly accused. Yeah, no. How to deal with that? There are many ways of simply walk away from that situation. I think that is the best. Correct. Anyways, I think we are running out of time. Sorry about that. Archana or Firoz, whoever is there, can we go on for another 10 minutes or so, because we have 4 people yet to speak. Yes, sir. Please take it. Oh, that's good. Thank you so much. We have Aruna ji, we have Shobha ji, and my dear friend Natkat Balak Suresh ji, and Anita ji, Mohan ji. 5 people are yet to open their mouths. So please, who would like to start? Natkat Balak? Yes, he has raised his hand. हाँ सुरेश जी बोलिए. वणक्कम सर. वणक्कम, very वणक्कम. For me, every day is a New Year day. All right. After 31st December, 1st Jan comes. Then, so far as laughter or smile is concerned, laughter or smile, when you show your 32 teeth, that is not laughter. That is not laughter. You don't have 32. I don't have 32. Yeah, you don't have 32 either, Suresh. I don't even have 20. Even I have my 2, 4, minus 4
Out of 32, I have -4. Okay, 28. चलो ठीक है. Accepted. The smile or laughter, it should be expressed through your eyes, not with your teeth or lip. Divine. The expression should be from your eyes, so far as laughter and we are concerned. So then, so far as New Year resolution, you are asking me a person like to me. Who only breaks resolutions every day. यानी आप इतने खुश हैं, you are generating so much of happiness around यार, इतने खुश हैं, इतने हंस रहे हैं. I'm privileged to be. हम हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं. Laughter therapy. I am really lucky and consider myself privileged and blessed to be associated with you brilliant souls. Live life with passion. Live life with passion. If you believe in karmic philosophy, आपका शरीर ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा. और क्या कहना चाहूंगा मैं. बढ़िया था. न्यू ईयर रिजोल्यूशन में मैं हमेशा हर साल सोचता हूँ आई विल कंसंट्रेट मोर ऑन, जितने अनफिनिश्ड बुक्स है वो खत्म करूंगा, लेकिन होता नहीं. आई टेक लाइफ एज इट कम्स. वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है. वाह वाह वाह. बस ऐसा सोच लो. When we can't do it, then put it on him. Well, when speaking about resolutions, I would like to add one small thing. There was a time when I resolved that I will read minimum one book per month. At one point of time, I was reading one book per week. Wow. So now it is not possible. I take a book, I go to sleep. So, see, you are getting good sleep because of that. There is a time and season for resolutions, particular type of resolutions. Okay, thanks a ton, Raman sir. Now I'll go alphabetical order. So I think Anita ji will come ahead of Aruna ji. Then we will have Mohan ji and then Shobha ji. Anita ji, go ahead. Yeah, hello everybody. Good evening. Actually, I didn't want to speak at all because ये मैंने टॉपिक पढ़ा ना कि रेजोल्यूशन के बारे में बात होगी आज. So I didn't want to say anything because I don't make any resolutions as such. ऐसे तो कहने के लिए कहते हैं resolutions are made to be broken, promises are made to be broken. ऐसा कुछ नहीं है, but I'm not in the habit of making any resolutions as such because I don't think 1st of January is a very special day. It is just like any other day. Actually हमारा न्यू ईयर है भी नहीं वो. हमारा न्यू ईयर तो अप्रैल में आता है ना. ये वेस्टर्न वर्ल्ड का है न्यू ईयर, तो वो वैसा कुछ नहीं है. कहने वाली थी ये, मैं भी इससे एग्री करती हूँ अनीता जी. हमारा भी, हम तो अप्रैल में ही मानते हैं अपना नया साल. हम तो अप्रैल में मानते हैं. ये इज जस्ट लाइक एनी अदर डे ऑफ द ईयर. ऐसा कुछ नहीं है. It's not that I am making some resolutions in the month of April. Not that I am not making any resolutions as such. I believe in moving with the flow. जैसा लाइफ, whatever life offers, जो कुछ भी आता है अपने तरफ ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है with gratitude. I feel we should be grateful every day, and that's what I feel very strongly about. And sometime back, Raman sir was talking about anger, and Satyanarayan ji also said something about anger. मेरा एक बहुत easy फंडा है. I want to share with you all today. Okay? Great. Go ahead. Because see, anger is something which everybody is facing every day in their life. Okay? Either we are getting angry or somebody else is getting angry with us. तो इसका एक बहुत easy फंडा क्या है? Whoever is being hurtful to you, okay? Suppose we are all past our working life. Once upon a time, some of us were working. तो क्या होता है वर्किंग लाइफ में? क्या होता है, कभी बॉस ने कुछ बोल दिया या somebody said something hurtful to you. तो इसमें बहुत easy how I dealt with this. अगर somebody is telling something hurtful to me which is making me very uncomfortable, very frustrated, or I'm hurting from inside. So एक चीज जान लीजिए, somebody, I don't remember, somebody was saying something about karma. I think Suresh Nanda ji said something about karma. तो इसमें बहुत ब्यूटीफुल एक इक्वेशन बनता है यहाँ. अगर कोई आपसे अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है, ठीक है, मेकिंग यू फील एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड, ही इज डूइंग समथिंग, ही और शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ यू. एंगर क्यों होता है? पहले तो ये समझना है, व्हेन समथिंग इज नॉट
happening according to our wish. According to our expectation, when something is not happening, then only we get angry. Because we expect everything around us to be how we want it to be. How a person should behave, it should be according to what we want. How our situation should be according to what we want. अगर उससे थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, अगर हमारे एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतरता है, तो we tend to get frustrated or angry. अगर आपको सपोज कोई एंग्री कर रहा है, ओके, by being unpleasant, by being hurtful, by doing something undesirable, तो एक चीज बड़ा मजेदार चीज है, वो जान लीजिए, he or she, that person is taking away bad karma from your life. ये है, ये यूनिवर्सल लॉ है. It will make you feel peaceful all the time. It will not make you angry. Once you realize that other person is taking some bad karma from your life and adding it to his bad karma का अकाउंट, उनका बढ़ रहा है, आपका गुड कर्मा का अकाउंट बढ़ रहा है. Once you realize this is a very easy way to deal with anger. You will not feel angry at all. It is his problem. जब आपको ये समझ में आ जाएगा, हाँ? It is his problem. जो गलत सोचते हैं. It is his problem. He is taking the bad karma from your life. Ultimately, we all have to deal with karmic balance, like Suresh ji said. हाँ, वो लेखा जोखा कहीं तो होता है ना. So once I understood this point, it helped me a great deal in dealing with my anger. Even I used to be angry. एक समय था मुझे ऐसा, I can't say that I never get angry now, but एक समय था जो मुझे काफी एंगर आता था मुझे. तो I learned to deal with my anger like this. वो एक सेकंड में आपको शांत कर देगा when you realize that other person is taking away the bad karma from your life. है ना, बहुत मजेदार बात है ना ये. बड़ी पते की बात है. Very good, interesting point. Very valid. It gives you such relief, you know. You'll try to practice this. It will give you such immense relief from all the frustrations and that anger that you must be facing in our everyday day-to-day life. So this is how I learned to deal with my anger. So I wanted to share with you. Very बहुत Thank you, simple Anita तरीका है. ji. I will encourage my wife to get more angry with me to take away more of my bad karmas. There is one interesting again, a குறள். தெல்லெடுத்து காத்தல் சினம் காத்தல் அல்லெடுத்து காக்கின் என் காவாக்கால் என். You control anger where your anger is respected. That is, the people fear your anger. In that situation, you control your anger. But you don't have to control your anger with your boss, because you won't do that. You won't show your anger to you. You will control it automatically, because it will be at the risk of your own job, you know. So anger directed towards those who respect you, that is the kind of anger you should control. That is what this Tirukural says. I had a great solution to manage my boss's anger. I just used to come back to my office. I had a dholak in my room. I used to play on it as though I'm hitting my boss. I feel relieved. But Lax sir, when you realize that boss is taking away your bad karma, वो एक मोमेंट में आपको शांत कर देगा ना. तब पता रहता ना. Working days में I used to feel very happy, you know. I used to feel very happy. जब कुछ होता था बॉस की तरफ से, I used to feel very happy from inside. Oh, so मेरा bad karma खत्म हो रहा है. He's taking it away from me. Good. That way I have also enjoyed that. Irritate करना बॉस को और कुछ चिल्लाएगा, उसमें एक मजा आता था. वो भी एक था. वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है. Thank you जी अनिता जी, बहुत अच्छा लगा. बहुत पते की बात कही आपने. This is very profound. I think Thank you so much. Thank you so much. Learn so much from each other. Wish you all a very good, a very satisfying New Year. अभी नेक्स्ट वीक हम लोग मानते नहीं है, लेकिन फिर भी 1 जनवरी को सब लोग थोड़ा बहुत मना ही लेता है. तो wish you all a very happy New Year, very flourishing New Year. We are talking about anger and laughing at this point of time, but you know, Firoz ji is waiting and कब खत्म होगा, लेकिन उसका anger बढ़ता जाता है. We are just there talking. Firoz ji थोड़ा और वक्त दे देना.
अभी अभी हम पता है आनंद जी फिरोज की जी बात क्या सोचेंगे? फिरोज जी बोलेंगे अच्छा अच्छा, उनको एंगर नहीं होगा, वो सोचेंगे ये मेरा बैड कर्मा ले रहे हैं ये लोग। No, no, sir. Please go for it. The forum is for you all. थैंक यू, थैंक यू। अरुणा जी गो अहेड, अब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को एंड जस्ट बयान कीजिए। Sir, my throat is not good, sir. I can't speak. Oh. Just I wanted to listen. That's all. Okay, thank you so much. So we'll move to Shobha ji. My throat is affected so much. Oh, I think we have Mohan ji ahead of Shobha ji. Sorry, Shobha ji. Anyway, Shobha ji, you go ahead. We'll have Mohan. Sorry. Good evening, sir. Good evening to Very good everyone. evening. Sir, this is my first time on this. I'm attending this session. I have seen 2 episodes of this session and I liked them very much. One was based on the different festivals that are celebrated in our country. I wanted to join, but evenings मेरी busy होती हैं क्योंकि मैं हिंदी classes होते हैं मेरे, इसलिए but I wanted to, this is the first time I'm attending. आज मेरा विचार सिर्फ ये था कि मैं सुनूंगी सबकी बातें, आप सभी लर्नेड लोगों की बातें बस सुनूंगी। अच्छा। It's been really very enlightening session for me also. जहाँ तक रेजोल्यूशन की बात है तो I think I'll go with a little bit with everyone whoever has spoken. सभी से थोड़ा थोड़ा सबके विचारों से। कभी मैंने रेजोल्यूशन नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था कि मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगी। इंस्टेड मुझे लगता है रिफ्लेक्ट करना जरूरी है हमें कि like sometimes in a week time, every day also maybe, or in a week कि हम ठीक चल रहे हैं अपनी लाइफ में, हम कैसे चल रहे हैं और अपने ऊपर अपने बिहेवियर पर भी अपने को देखना बहुत जरूरी होता है। और मोटो जहाँ तक रहा है बस यही रहता है कि लिव एंड लेट लिव, जितना कम हो सके उतना जज करें दूसरों को, अपने से परे भी देखना सीखें। और जहाँ तक गुस्से की बात है मुझे आई टोटली अग्री विद अर्चना जी, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन द कर्मा थियोरी कि दैट वो कर्मा हमारा दूसरा जो होता है वो ले लेता है थोड़ा। और बाकी जहाँ तक गुस्से का सवाल है, जब हम गुस्सा करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए या तो सबसे पहले हम खुद परेशान होते हैं बहुत ज्यादा। और मोर देन फिजिकल हेल्थ, आई थिंक मेंटल हेल्थ जिस पर आजकल बहुत फोकस भी हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स ऑन द फिजिकल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारे शरीर पर हमारी सोच का बहुत असर होता है। ऐसा ऐसा मैं समझती हूँ कि जब हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम चीजों को अपनी तरह से सोचने लगते हैं, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए, तब हमें ज्यादा स्ट्रेस होती है। और दैट इज व्हाट मेक्स अस एंग्री आल्सो एट द एंड ऑफ द डे। तो इट्स बेटर टू ट्राई टू बी लिटिल थोड़ा सा टेक इट इजी वाला एटीट्यूड रख के चलना, जब तक कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती। उसको भी गुस्से की बजाय अगर हम थोड़े हल्के फुल्के तरीके से सॉल्व करें जहां तक हम संभव हो सके। अदरवाइज जैसे सर ने बोला था, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम दैट, एंड इट्स नॉट पॉसिबल, जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, try to make yourself बस गुस्से से कभी कोई समाधान नहीं प्रॉब्लम का। और मैंने बहुत बोल लिया, एक्चुअली मैं आज सिर्फ सुनना ही चाह रही थी। और अच्छा लगा। this is what I think is important. Thank you so much. Thank you so much for airing your views. मोहन जी अभी बचे हैं। मोहन जी आप म्यूट कर लेंगे? मोहन तिंगालया वरना वो भी शायद ऑन रखे हुए हैं, बात नहीं करना चाहेंगे, पहली बार आए हैं शायद। मोहन जी आप हैं? नहीं तो हमको यही बोलना पड़ेगा, ग ग ग ग गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। मोहिनी मैम आप हो यहाँ पे? अच्छा वो मोहन दिखता है नाम, चलिए हाँ। कोई नहीं। सो I think I have not missed out on anybody. Hopefully everybody spoke. Thank you so much for
being part of this enlightening session. आपने सबने बहुत अच्छी तरह से contribute किया है इसमें. अच्छा लगा आपके साथ रह के. We'll meet again next Tuesday and hopefully another topic that will keep us engaged for 1.5 hours. So thank you so much. आज है 19 यानी 26 को फिर मिलेंगे post Sir, Christmas. we will meet. Sorry, sir. Sir, we will Thank you, meet. sir. We Thank will you, meet sir. next year now for Guftagu. Oh, okay. That Oh, is on okay. 9th of January because 3rd we are starting up again. तो अच्छा. ये भी Okay. जितने भी events है, those are the last events of 2023. Oh, okay, okay. I stand Yeah. corrected. Okay. Thank you, Firoz. Okay. So आपने हमको Welcome. छुट्टी ग्रांट किया है next week के लिए. अरे sir, right. Thank you. Okay. Thank you, sir. It's very Thank you very much. enlightening session. Yes. Bye bye. Good night, everyone. Happy Merry Christmas. Thank you, everybody. Thank you, lads. Happy New Thank Year, you. sir. Good, Thank you. Great goodbye. New Year to Happy all. New Year. Merry Christmas. Happy New Year to you. Merry Christmas.